Good morning, learners. Today we will discuss a new topic that is on citizenship. Here we will discuss the concept, evolution, methods of acquiring citizenship, and also the reasons for losing citizenship. So the term citizen has been derived from the Latin word civics. The word literally means resident of a city who enjoys certain privileges of such residence. By a citizen, we mean a member of a state who enjoys all the rights and privileges granted by it and discharges his duties and obligations towards the state and other associations within it. The citizen is a person who owes loyalty or commitment to the state and in turn receives protection from the state. He must fulfill his duties and obligations toward the state as the state grants him civil, political and social rights. So ये जो सिटीजन टर्म है वो आया है लैटिन वर्ड सिविक से. इसका मीनिंग है रेसिडेंट ऑफ अ सिटी एंड बिकॉज ऑफ हिज रेसिडेंसी he enjoys certain rights and privileges. और ये जो rights and privileges उनको मिलता है वो प्रोटेक्शन करने का जो काम है ये किसका है? स्टेट का. और इन टर्न सिटीजन को क्या करना पड़ता है? स्टेट के प्रति लॉयल रहना पड़ता है. Then the concept of citizenship is composed of three main elements or dimensions. The first is citizenship as legal status defined by civil, political and social rights. Here the citizen is a legal person free to act according to the law and having the right to claim the law's protection. It need not mean that the citizen takes part in the law's formulation, nor does it require that rights be uniform between citizens. The second considers citizens specifically as political agents, actively participating in a society's political institutions. The third refers to a citizenship as membership in a political community that provides a distinct source of identity. जो ये citizenship concept है उसका basically तीन dimensions है. First dimension बोलते citizenship जो है एक legal status है और पर्सन को सब करने का फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड वो क्या क्लेम कर सकते हैं? प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं. देन दूसरा डायमेंशन पे बोला गया है सिटीजन आर स्पेसिफिकली अ पॉलिटिकल एजेंट्स है और वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. कहाँ पे? जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. और जो थर्ड डायमेंशन है वहां पे सिटीजन को एज ए मेंबर पॉलिटिकल कम्युनिटी का एज ए मेंबर इन रेफर करते हैं. ओके. देन thus we can simply say that citizenship denotes the status of an individual as a full and responsible member of a political community. Citizenship implies two-way relationship between individual and the state. Citizenship is gained by meeting the legal requirements of a national, state or local government. Our nation grants certain rights and privileges to its citizens. In return, citizens are expected to obey their country's laws and defend it against its enemies. The value of citizenship varies from nation to nation. In some countries, citizenship can mean a citizen has the right to vote, the right to hold government offices, and the right to collect unemployment insurance payment, etc. So, citizenship जो concept है वो simply मतलब क्या मीन करता है? इंडिविजुअल का एक स्टेटस मीन करता है जो रेफर करता है एक सिटीजन को एक एज ए रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी. और ये सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्ट है ये टू वे रिलेशनशिप इंडिकेट करता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट. स्टेट क्या करेगा? सिटीजन को प्रोटेक्ट करेगा और इन रिटर्न सिटीजन को क्या करना पड़ेगा? स्टेट का जो लॉज रूल्स रेगुलेशन है उसको मानना पड़ेगा और जब जरूरत पड़ेगा तो स्टेट को डिफेंड भी करना पड़ेगा अगेंस्ट इट्स एनिमीज.
Then living in a country does not mean that a person is necessarily a citizen of that country. Citizens of one country who live in a foreign country are known as aliens. Their rights and duties are determined by political treaties and by the laws of a country in which they stay. So, एक country में रहना मतलब ये नहीं मीन करता कि उस country का वो citizen है. कोई भी दूसरा देश का सिटीजन किसी भी कंट्री में रह सकता है, उनको एलाइन बोल के जाना जाता है. और उन लोगों का जो राइट्स एंड ड्यूटीज होगा जहां का वो सिटीजन नहीं है, वो डिफाइन करेगा उस कंट्री का जो लॉज है वो, कि उन लोगों को कौन सा राइट्स एंड ड्यूटीज मिलेगा. देन कमिंग टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप. First feature, we can say membership of a state, then enjoyment of several rights and freedoms in the state, commitment to perform certain duties towards the state, particularly to defend the state against any war or aggression, then loyalty towards the state. Features बोलने से हम लोग बोल सकते हैं citizenship मतलब एक membership है किसी particular state का, और because of that membership उस पर्सन को क्या मिलेगा, बहुत सारा राइट्स एंड फ्रीडम्स मिलेगा उस पार्टिकुलर स्टेट का, और इन रिटर्न वो पर्सन को भी कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करना पड़ेगा, लाइक डिफेंड द स्टेट अगेंस्ट एनी वॉर और एग्रेशन. देन पर्सन को उस स्टेट के प्रति लॉयल भी रहना पड़ेगा. देन कमिंग टुवर्ड्स द evolution of the concept of citizenship. So basically the idea of citizenship in its early form is found in ancient Greek and Roman state systems. It is to be noted that the form of ancient Greek community was entirely different from the present day political community of democratic nation states. In a modern democratic state, all members of a community are regarded as citizens, but in ancient Greek city-states, very few inhabitants enjoyed the status of freemen who were treated as full citizens. These citizens were equal among themselves as regard their rights. The rest of the community comprised of slaves, women, and aliens who had no rights of citizenship. In this sense, citizenship stood for effective participation in the exercise of power. जो ये सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है उसका जो अर्ली फॉर्म हमें देखने को मिलता है एंशियंट ग्रीक एंड रोमन स्टेट सिस्टम पे. एंशियंट ग्रीक में क्या हुआ था, सब लोगों को सिटीजनशिप स्टेटस नहीं दिया गया था. कुछ लोगों को, जिन लोगों को फ्रीमैन बोल के जाना है, उन लोगों को ही सिर्फ फुल सिटीजन का स्टेटस दिया गया था. बट मॉडर्न जो नेशन स्टेट सिस्टम है वहां पे कम्युनिटी के सब मेंबर को ही एज ए सिटीजन माना जाता है. और एंशियंट ग्रीक में क्या होता था, जो स्लेव्स थे, वुमेन थे और एलाइंस थे, उन लोगों को सिटीजनशिप राइट नहीं दिया गया था. बट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स ए न्यू डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इवॉल्व इन द रोमन एम्पायर. देयर आल्सो सिटीजनशिप वाज कन्फाइंड टू पावर होल्डर्स. लेटर इट वाज एक्सटेंडेड टू ऑर्डिनरी पीपल एंड दोज वैंक्विश्ड इन वार. उसके बाद जब ग्रीक सिटी स्टेट का डिक्लाइन हुआ तब सिटीजनशिप का एक नया डेफिनेशन सामने आया, और वो रोमन एम्पायर पे. और वहां पे भी सिटीजनशिप जो स्टेटस है कुछ लोगों तक ही कॉन्फाइन था, जो लोग पावर होल्डर्स थे. बट बाद में सिटीजनशिप जो मतलब स्टेटस है वो एक्सटेंड किया गया ऑर्डिनरी पीपल तक. और जो लोग जो टेरिटरी वार के वजह से, मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ वार कॉन्क्वेयर किया था, वहां के जो लोग थे उन लोगों को भी सिटीजनशिप स्टेटस दिया गया इन द रोमन एम्पायर. देन द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप रीच्ड इट्स जेनेट with the French Revolution and the consequent declaration of rights of men and citizens. In the 19th century, the influence of liberalism gave rise to market relations, which promoted a new notion of citizenship. Now the idea of natural rights came to be regarded as the basis of citizenship. The citizens set up a state for the protection of these rights. If the state fails to protect rights, that is the right to life, liberty, and property, the individual
would be free to exercise his right to resistance against the state. उसके बाद जो सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है वो पीक पे पहुंचा जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और उसके बाद 19th सेंचुरी में जो लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट है उसके वजह से क्या हुआ, एक नया सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, और अभी सिटीजनशिप जो स्टेटस नेचुरली लोगों को मिलता है. देन कमिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड्स फॉर गेटिंग सिटीजनशिप, क्या क्या ग्राउंड पे हमें सिटीजनशिप मिल सकता है. So there are basically two processes. One is natural and another one is naturalized process. So citizenship is normally acquired by each person right at the time of his birth, either based on the citizenship of his parents or based on his place of birth. In both cases, it is called citizenship by birth. So naturally citizen को क्या मिलता है, किसी एक पर्सन को सिटीजनशिप मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज पेरेंट्स और बेस्ड ऑन हिज प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे जन्म हुआ है या उनके पेरेंट्स के थ्रू सिटीजनशिप मिलता है. वी कैन एक्सप्लेन इट लाइक सिटीजनशिप बेस्ड ऑन parentage. It confers citizenship of the home state upon the children born of their citizens at home or abroad. States like Germany and France recognize parentage as the only decisive factor for the determination of citizenship. So, parents जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक चिल्ड्रन को उस कंट्री का क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा. नेक्स्ट, सिटीजनशिप बेस्ड ऑन बर्थ प्लेस. These principles implies that the territory upon which the child is born is exclusively the determining factor of citizenship. It does not matter whether parents are citizens or aliens of the territory. Under this principle, a child born abroad is foreign, although his parents may be a citizen. Argentina recognizes this principle. So, citizenship और एक तरीके से मिल सकता है क्या, बर्थ प्लेस. मतलब एक चिल्ड्रन जिस जगह पे ही बॉर्न करेगा, मतलब जन्म लेगा, उसका जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स किसी भी कंट्री का हो, उस कंट्री का हो या दूसरा कंट्री का हो, लेकिन वो चिल्ड्रन जिस कंट्री में जन्म लेगा उस हिसाब से उसको क्या मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द चिल्ड्रन गेट सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ये जो प्रिंसिपल है ये अर्जेंटीना में चलता है. Then another process is naturalized process. Another ground for getting citizenship is by adoption. The citizens who adopt this method to acquire citizenship are known as naturalized citizens. These citizens are those who for certain reasons decide to give up his original citizenship to become the citizen of another state by fulfilling the conditions laid down by that state. So, और एक प्रोसेस है वो है नेचुरलाइज प्रोसेस. यहाँ पे क्या होता है, सिटीजन क्या कर सकते हैं, दूसरा कंट्री का जो सिटीजनशिप है वो अडॉप्ट कर सकता है by fulfilling the conditions of that state for a citizen. मतलब एक सिटीजन दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करके दूसरा कंट्री का जो सिटीजनशिप है वो अडॉप्ट कर सकते हैं. देन कमिंग टू द रीजंस ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, कैसे सिटीजनशिप जा सकता है. फर्स्ट वन इज बाय मैरिज. आफ्टर गेटिंग मैरिड टू ए फॉरेन नेशनल, ए वुमन लूजेस हर पेरेंट्स सिटीजनशिप एंड एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ हर स्पाउस. मतलब जब एक लड़की कोई फॉरेन नेशनल से शादी करता है तब उस लड़की का क्या होगा, उनका जो पेरेंटल जो सिटीजनशिप है वो चला जाएगा, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वहां का सिटीजन चला जाएगा, और उनके हस्बैंड के जो कंट्री है वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगा. नेक्स्ट वन इज बाय रेजिग्नेशन. वन कैन रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ हिज स्टेट थ्रू रेजिग्नेशन. Then another is by long absence. If a citizen remains absent from his country for a long period, he loses the citizenship of the country of his birth. The period of absence is different in
different countries. मतलब कोई भी एक सिटीजन बहुत दिन से उसका जो होम कंट्री वहां पे नहीं है तो उसका सिटीजनशिप जा सकता है. देन in renouncing citizenship in case of double citizenship. Sometimes a person gets double citizenship, but a person can't be the citizen of two states at the same time. So he has to renounce the citizenship of one state. और एक कॉज हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन को दो देश का सिटीजनशिप मिल जाता है, लेकिन दो देश का सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते. सो वो पर्सन को किसी भी एक स्टेट का सिटीजनशिप क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है. सो अनदर रीजन of losing citizenship by application. By giving an application, an individual can also relinquish the citizenship of his state. Again, when a child is adopted by a citizen of another country, he automatically loses the citizenship of the country of his birth. मतलब जब एक चिल्ड्रन को दूसरे देश का कोई सिटीजन अडॉप्ट कर लेता है, तब क्या होता है, चिल्ड्रन जिस कंट्री से मतलब बिलोंग करता है उस कंट्री का सिटीजनशिप चला जाएगा, और जिस कंट्री के नागरिक ने अडॉप्ट किया वहां का सिटीजनशिप मिल जाता है. तो अनदर रीजन इज बाय डिफीट. व्हेन सम टेरिटरी ऑफ द स्टेट इज कॉन्क्वर्ड बाय अनदर स्टेट, द सिटीजन्स ऑफ द कॉन्क्वर्ड स्टेट लूज देयर सिटीजनशिप. मतलब जब कोई दूसरा स्टेट किसी स्टेट को कॉन्क्वेयर कर लेता है, जीत लेता है, तो वो जो हारने वाला स्टेट का जो सिटीजन है उन लोगों का सिटीजनशिप चला जाएगा. एंड ऑल्सो बाय गेटिंग गवर्नमेंट सर्विस अब्रॉड. When a citizen gets government service in another state, he loses the citizenship of the state of his birth. Again, if a person revolts against the state, his citizenship can also be taken by his state. If मतलब कोई भी पर्सन जब स्टेट के अगेंस्ट रिवॉल्ट करेगा और एंटी नेशनल कुछ काम करने से वो स्टेट क्या कर सकता है, उस पर्सन का सिटीजनशिप जो स्टेटस है वो छीन सकता है. देन अनदर इज एक्सेप्टेंस ऑफ टाइटल्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट. इन सम कंट्रीज द रूल इज दैट इफ ए सिटीजन एक्सेप्ट्स a title from another country without getting the prior approval of the state, his citizenship can be terminated. मतलब कुछ कुछ कंट्री में ऐसा रूल है कि वहां का जो सिटीजन है दूसरे कंट्री का जो मतलब दूसरा कंट्री से दिया हुआ टाइटल एक्सेप्ट करने से उस कंट्री का अप्रूवल ना लेके तब भी सिटीजन का किया जा सकता है, सिटीजनशिप जो स्टेटस है वो जा सकता है. So here in this video, I have elaborately discussed about the meaning and also how the concept of citizenship evolved, and also discussed about the process of adoption of the concept of the status of citizenship. Then I've already discussed about the reasons for losing citizenship. मतलब इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग क्या है, कैसे सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ. देन ऑल्सो डिस्कस किया है कि कैसे सिटीजनशिप जो स्टेटस है वो मिल सकता है किसी भी पर्सन को, और कैसे सिटीजनशिप जो स्टेटस है वो कैसे जा सकता है. तो जिन लोगों ने मतलब मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो काइंडली. एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब. थैंक यू.